So hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain you the BSc Nursing paper, first year paper of Nutrition and Biochemistry, which was of session 2020 and 2021, and the paper code was BSN 102 and paper ID was 2002. So previous video I've uploaded of anatomy and physiology. I'll provide you the link in the description box so you can check out that video from there. So in this video, I'm going to guide you all people that how you have to attempt your paper carefully, how you have to manage your time according to the marks provided, and how you have to score good in your exams. So starting with the nutrition portion, which is of 50 marks. So the first question is, define menu planning and discuss the factors considered in menu planning, and which is of 10 marks. सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि यू जस्ट हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. सो ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है. सो मिनिमम 6 to 7 पेजेस आपको इसमें लिखना है, एंड दैट शुड बी वेल इनफ टू एक्सप्लेन योर आंसर. लाइक यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग रॉन्ग और रबिश, यू जस्ट हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जैसे सबसे पहले लिखा है डिफाइन मेन्यू प्लानिंग, तो आप वहाँ पे मेन्यू प्लानिंग को डिफाइन करेंगे. उसके बाद आप सारे फैक्टर्स लिखेंगे. तो मेन्यू प्लानिंग को डिफाइन करने से पहले आप थोड़ा इंट्रो दे सकते हैं मेन्यू प्लानिंग का, सो दैट आपका क्वेश्चन और एनहांस हो सके. तो मेन्यू प्लानिंग का डेफिनेशन लिखने से पहले आप इंट्रो दे सकते हैं, उसके बारे में जनरल उसकी मीनिंग बता सकते हैं. तो मीनिंग एंड इंट्रो दो हेडिंग आप डिफाइन करने से पहले यहाँ पे ये दे सकते हैं. उसके बाद फैक्टर्स पूछें तो यू जस्ट हैव टू राइट द फैक्टर्स, नॉट एनीथिंग एल्स. यू जस्ट हैव टू राइट द फैक्टर्स विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स. सो आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. फर्स्टली आप डिफाइन करेंगे मेन्यू प्लानिंग बहुत अच्छे से. डेफिनेशन मीन्स द डेफिनेशन. यू there is a huge difference between introduction and definition. You just have to write the definition. Before that you can write intro or meaning or anything else which you know about menu planning. So next part is short notes. So short notes, 5 short notes यहाँ पे दिए हैं जो कि हैं 5 marks each. So that makes of 25 marks. So first portion is function, sources and requirement of vitamin B12. सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने से पहले आप यहाँ पे विटामिन्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं. विटामिन्स का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप फिर अपना क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद आप फंक्शंस ऑफ विटामिन B12 लिखेंगे, फिर सोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स. मेक श्योर दैट द आंसर यू आर राइटिंग शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. लाइक फर्स्ट यू आर राइटिंग द फंक्शंस, देन सोर्सेज एंड देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन B12. सो आपको क्या करना होता है कि आप फंक्शंस की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप उसे अंडरलाइन करेंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट द सोर्सेज एंड देन रिक्वायरमेंट. तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर बहुत नीट एंड टाइडी दिखेगा, and the examiner will also be impressed from your work. So the next portion is importance of nutrients during pregnancy with the day's menu plan. इसमें आपको मेन्यू प्लान भी बनाना है प्रेगनेंसी का, एंड यू हैव टू राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो आप इसमें डायरेक्टली जंप करने से पहले कि न्यूट्रिएंट्स का प्रेगनेंसी में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसमें आप पहले नॉर्मली इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपने क्वेश्चन में दे सकते हैं, एंड उससे भी पहले आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले आप न्यूट्रिएंट्स का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे, एंड उसके बाद आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड उसके बाद अपना आप सीक्वेंसली मेन्यू प्लान बना सकते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज National Nutritional Agencies, mention any two. So you have to write about the National Nutritional Agencies, and there are many National Nutritional Agencies. From among them, you can write any two National Nutritional Agencies. So this is a very clear question. So next is functions of carbohydrate. This is very easy question. So before writing the functions of carbohydrate, you should write something about carbohydrate. Like you should give the introductions of carbohydrate, like what is carbohydrate, meaning of carbohydrate, in which form the carbohydrate is present in a food, like that. Then you can write the functions of carbohydrate. So this is a way of attempting the question and increasing the marks of your question. So next part is classification of food. In this question also, first you will mention about food, what is food and how food gives us energy, and then only you will write about the classification of food. So the next part is of answer briefly. You have to explain the answers in brief. First part is dietary fiber. So this is a direct question. You just have to write about dietary fibers in this. So you just have to see that you have to manage your time accordingly. You don't have to write so many pages in 3 marks question or in 5 marks question. You just have to explain a little bit more lengthy form in 10 marks question, and in 5 marks and 3 marks accordingly you can write. So the next part is functions and requirement of iron. So in this question also सबसे पहले आपको लिखना है आयरन. आयरन क्या होता है उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है.
उसके बाद आपको उसका फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट लिखना है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना कि आप फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट अलग अलग लिखें। यू डोंट हैव टू मिक्स दीज टू पोर्शन ऑफ क्वेश्चन। So the next is Prevention of Food Adulteration Act. So this is a direct question and this is a general question which is an important question in nutrition. So you can write it accordingly. So the next part is Neuropathy Diet. This is also a direct question. You just have to write about neuropathy diet and all the things included in that. So E part is overhydration and dehydration. In this question, first you can give the introduction about overhydration and then dehydration. And if you know the difference between overhydration and dehydration, you can mention that clearly for gaining extra marks. Like you can gain extra marks like 3 out of 3. Now like I am saying extra marks, that doesn't mean that you will get 4 out of 3. No, you are totally wrong. You just have to write it properly so that you can get 3 out of 3 in each portion. So in this way we have completed our nutrition portion that was of 50 marks. So if you will write correctly and everything will be in proper sequence, then you can gain more than 40 marks or even more than 42 or 43 marks. So now coming to next is biochemistry portion. In this the first question is of 10 marks, which is of dietary sources, biochemical functions and deficiency manifestations of vitamin D. So this is a lengthy question and you have to write it correctly. So first you have to write the dietary sources. So before starting the dietary sources, you can give the introduction of vitamins, like what are vitamins and what are the types of vitamins, classification of vitamins. You can give a brief intro about the vitamins. So after giving the introduction, you can start the dietary sources of vitamin D and then you can start the rest of the portion of your question. Make sure that you differentiate between dietary sources, biochemical functions and deficiency manifestations of vitamin D. You do not have to mix all the portion of your answer. You should clearly mention the headings before starting any answer. So the next part is short answers. Short answers, these are of 10 marks. So the first portion is of 5 marks. Oral glucose tolerance test, OGTT, that means. So in this portion you can give a brief description about the oral glucose tolerance test, or like why this test is performed, what is the meaning of glucose, normal glucose level in a body. Like this you can give before starting the question. The next part is lipoproteins. So this is a direct question. You just have to start with the introduction and end with functions of lipoproteins or dietary manifestations or deficiency of lipoproteins in our body. So next question are of 1 mark question, and first part is normal fasting blood glucose level. These are direct question and you just have to write the answers. So normal fasting blood glucose level, you have to mention that only. Next part is metabolic acidosis. C is 2 biologically important compound formed from tyrosine. So in these questions you just have to write the answers. You don't have to write any extra thing for that. D part, 2 essential fatty acids. So in these questions you just have to write 2 words. Like in 2 essential fatty acids, you just have to give the 2 examples of fatty acid and you'll score 1 marks. E part is epimerism. So you can give the definition of epimerism. That's it. So guys, that was it for today's video. So I have explained you all the important things that how you have to attempt your nutrition and biochemistry paper. So usually क्या होता है कि biochemistry के पेपर में बहुत सारी cycles आती हैं, like urea cycle, ATP cycle. So in this paper there was no cycle and normally general questions थे, like OGTT. ये question पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में बिल्कुल नहीं देखे गए थे. नॉर्मली क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री में साइकिल्स आती हैं, साइकिल्स पूछी जाती हैं, बट इन दिस पेपर ऑफ 2020 एंड 2021 सेशन देयर वाज नो साइकिल एंड ऑल द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो दीज क्वेश्चंस वर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर. So I explained you all the questions, like how you have to attempt your paper. So if you want, I can explain you other papers also. I'll try to explain you all the other papers. So if you have any query in any question, so you can comment down below. And also if you want previous years more papers, then I will try to upload those papers also. So if you like this video, then like, share and comment down below, and also subscribe to my channel. Thanks for watching.